Very good morning, students. I hope you all are great and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 8, which is lists and tables in HTML. तो in this chapter हम लोग पढ़ेंगे कि हम HTML के अंदर list और tables को कैसे create करते हैं for our information or data. So without wasting any further time, let's understand it. The name of our chapter is List and Tables in HTML, and the topics which we will discuss in this lesson are: understand how to create and use lists in HTML, understand how to create tables in HTML and manipulate their properties, learn about different types of lists, and explore the attributes that can be used with the table tags for formatting. Now we have an activity which says, why might a restaurant choose a table layout for their menu instead of just listing all their food items? So, listing all the food items will be very unorganized because tables help करते हैं उनको to categorize their food into beverages, main food, their snacking, their different cuisines. तो टेबल जो फॉर्मेट है वो और अच्छे से उनके जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करेगा विच विल अट्रैक्ट दी ऑडियंस और दी कस्टमर्स. नाउ HTML5 प्रोवाइड करता है हमें टूल्स टू स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेजेस विद लिस्ट एंड टेबल्स सिमिलर टू द फंक्शनैलिटी फाउंड इन वर्ड प्रोसेसर जैसे MS Word. This chapter will explore creating various lists and tables using HTML5. Now, creating lists. When we present information on a website, we often want to organize it in clear and structured manner. List essential tool होता है HTML5 का that help us achieve this goal. List allow करते हैं हमें to display items in a way that is both easy to read and visually appealing. लिस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं. प्राइमरली 3 टाइप्स वी हैव. पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूजुअली बुलेटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि द टैग पेयर विच इज UL and /UL stands for the unordered list while LI stands for list item. Now you may use /AI to close the tag, but this is optional. Now bulleted before each item is generated by LI tag. LI tag की मदद से जो bulleted form आती है वो generate होती है. There is no limit to the number of list items you may have in single list. For example, एक कोड है UL LI milk, LI bread, LI eggs. तो यहाँ पे हमने bullets में ये order लिखा है. The type attribute of the UL tag can be used to change bullet style displayed in front of the list item. हम इस bullet style को भी change कर सकते हैं. There are 3 bullet styles. For example, UL type is equals to disk हमें ये वाला bullet देगा which is this. UL type is equals to circle हमें ये वाला देगा and UL type is equals to square हमें square bullet देगा. Now, ordered list कौन सी होती है? Ordered list होती है जो हमारी numbered list होती है. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक proper order of list present होता है. Ordered list is very much similar or structure to the unordered list except that यहाँ पे जो opening tag होता है for the list is OL instead of UL and closing tag is /UL instead of /UL. List items within the list still use the same tag. जैसे OL, LI, add flour, mix in water, knead the dough. तो यहाँ पे हमारे पास ordered list में numbers आ जाते हैं, इसलिए हम इनको numbered list बोलते हैं. Now the type attribute of OL tag can be used to change the type of numbering. यानी कि हम जब 1 वाला लिखेंगे तो 1 2 3 आएगा, A लिखेंगे तो कैपिटल ABC आएगा, स्मॉल लिखेंगे स्मॉल ABC, I लिखेंगे तो हमारा ये वाला रोमन नंबर्स आएगा और स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल वाले रोमन नंबर. नाउ नेक्स्ट होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट विच इज DLDDDT. नाउ ये जो लिस्ट है ये इन्वॉल्व करती है टर्म अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. The description list is created by the DL tag with conjunction with DD/DT tag. जो DL tag है वो define करता है entire description list and DT tag specify करता है description term. और जो हमारी DD tag है वो specify करता है description term definition. Now example code doc type HTML head title में हमने description list दे दिया, title close, head close body DL HTML CSS then क्लोज कर दिया हमने उनको. तो इस तरीके का हमारे को रिजल्ट मिलेगा. क्रिएटिंग टेबल्स. टेबल एक अरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का इन रोज एंड कॉलम्स जो कंटेन करते हैं सेल्स एंड दैट मेक कंपेयरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंफॉर्मेशन इजियर. टेबल्स जो होते हैं HTML के अंदर वो प्ले करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर. नाउ टेबल्स को हम यूज कर सकते हैं इन मेनी डिफरेंट वेज, जैसे एडिंग इंटरैक्टिव फॉर्म फील्ड्स, dividing the page into separate sections with the help of invisible table, creating menus, creating fast loading headers for the pages. Tags used जो होते हैं tables में, creating a table in HTML require करता है
टेबल टैग्स, तो कुछ बेसिक टेबल टैग्स होते हैं जैसे टेबल स्लैश टेबल, ये हमारे नॉन एम्प्टी टैग्स होते हैं एंड ये मार्क करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द टेबल। नाउ TR/TR ये रो टैग होता है जो डिफाइन करता है रो इन अ टेबल। TH/TH ये हेडिंग टैग्स होते हैं, ये टेबल के अंदर हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं। TD टैग्स ये डेटा टैग होते हैं जो डेटा को डिफाइन करते हैं इन द सेल्स। देन वी हैव कैप्शन जो डिफाइन करता है टाइटल ऑफ द टेबल। एंड लेट अस टेक डिफरेंट टर्म यूज्ड इन डिफाइन अ टेबल, जैसे ये हमारी हेडिंग्स होती हैं, दिस इज आवर सेल, ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, दिस इज आवर रोज एंड दिस इज द कॉलम। HTML code for a table is always based on rows and not on columns. Creating a table in HTML, to create a table in HTML जो table tag है वो मार्क करता है start and slash table मार्क करता है end of a table। हर एक रो जो होती है टेबल के अंदर वो स्टार्ट करती है विद द TR टैग और एंड होती है विद स्लैश TR टैग। TR/TR tags must always be inside table tag. Column contain करता है cell and each of which starts with TD tag and ends with slash TD tag. TD/TD tags must always be inside the row tag. Now to specify the column heading हम यूज करते हैं TH tag को और end करते हैं with slash TH tag. And जो caption tag है उसको यूज किया जाता है to specify the title of the table. Now let us create our given table in HTML. Table above does not give the actual appearance of the table except that the data is shown in the rows and columns. जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सारी चीजें हमने मेंशन कर दी, टाइटल दे दिया, टेबल बॉडी के अंदर हमने नेम एज एंटर कराया, रिया, रोहन, और इस तरीके से हमें मिला है in the form of rows and columns. Now let us discuss different properties of the table in the next section to enhance its appearance. टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टैग के जो हेल्प करते हैं हमें टू क्रिएट टेबल इन अ बेटर एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं टेबल टैग के वो एक्सप्लेन है इन द गिवन टेबल, जैसे बॉर्डर, ये स्पेसिफाई करता है थिकनेस ऑफ द बॉर्डर अराउंड द टेबल एंड द वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पिक्सेल्स, जैसे टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2। बॉर्डर कलर ये स्पेसिफाई करता है बॉर्डर का कलर, लाइक टेबल बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। पीजी कलर बैकग्राउंड जो है टेबल का उसको जस्टिफाई करता है। बैकग्राउंड स्पेसिफाई करता है यूआरएल ऑफ एन इमेज टू बी डिस्प्लेड एज अ बैकग्राउंड ऑफ द टेबल, यानी कि अगर हमें अपने टेबल के बैकग्राउंड में किसी इमेज को लेना है तब हम इसका यूज करते हैं। सेल स्पेसिंग डिफाइन करता है एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो स्पेस है और ये वैल्यू भी पिक्सल्स में होती है। सेल पैडिंग ये स्पेसिफाई करता है स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर, द वैल्यू इज स्पेसिफाइड अगेन इन पिक्सल्स। हाइट ये स्पेसिफाई करता है हाइट ऑफ द टेबल इन द टर्म ऑफ पिक्सल्स और परसेंटेज। विड्थ ये स्पेसिफाई करता है विड्थ ऑफ द टेबल इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स या फिर परसेंटेज। नाउ यूजिंग द बॉर्डर, बॉर्डर कलर या बीजी कलर आउट एट्रीब्यूट, लेट अस अप्लाई बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर एट्रीब्यूट्स इन आवर टेबल। तो हमने क्या किया यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया माय टेबल बॉर्डर कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू बैकग्राउंड एंड बीजी कलर हम इस तरीके से भी दे सकते हैं फॉर दी हेडर। नाउ हमने दिया है टेबल क्लास माय टेबल, उसमें नेम एंटर कराया, एज एंटर कराई रिया और रोहन की। तो लाइक दिस हमारे टेबल के अराउंड एक बॉर्डर आ गया, हमारा जो हेडिंग का बैकग्राउंड था वो लाइट ब्लू है और जो हमारा बॉर्डर का कलर था वो ब्लू है। नाउ यूजिंग द सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग एट्रीब्यूट, तो हमने जो जस्टिफाई किया था वो तो क्लियर ही रखा है, बस हमने यहाँ पे अब क्या किया है, हमने यहाँ पे टेबल क्लास इक्वल्स टू माय टेबल सेल स्पेसिंग दे दी 5 और सेल पैडिंग दे दी 10। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कुछ स्पेस क्रिएट हो गया अराउंड दी सेल। फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू टू ओपन अ सोर्स कोड व्यू इन ब्राउजर टू व्यू द HTML। एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे TR, TD एंड TH टैग्स, इनको अप्लाई करने के लिए हम कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं टू कंट्रोल, जैसे अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कलर एट रो और सेल लेवल। तो अलाइन ये स्पेसिफाई करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन अ सेल, द वैल्यू कैन बी लेफ्ट राइट और सेंटर। बीजी कलर स्पेसिफाई करता है बैकग्राउंड कलर ऑफ द रो और डेटा सेल। रो स्पैन ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रोज अ डेटा सेल शुड स्पैन एंड दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद द TD टैग एंड द TH टैग। कॉल स्पैन ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ कॉलम्स अ डेटा सेल शुड स्पैन एंड दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद द TD टैग और TH टैग। तो अगर हम TD TR टैग इसको यूज करते हैं फॉर द अलाइनमेंट एट्रीब्यूट एंड बैकग्राउंड कलर, तो हमने क्या किया यहाँ पे जो पहले की स्पेसिफिकेशंस थी दे आर सेम, सेल पैडिंग इज सेम, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे रखा है, नेम एंटर करा रहे हम, अब हमने यहाँ पे अलाइनमेंट प्रोवाइड कर दी सेंटर एंड राइट। यूजिंग द रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स फॉर TD टैग, तो हमने क्या किया यहाँ पे
जस्टिफाई कर दिया, बॉर्डर स्पेसिंग, removes default space between cells, my table th, my table border, add some padding for better readability, background color हमने दे दिया. Now यहाँ पे wall span 2 student details, alignment center है यहाँ पे, row span 2 दे दी यहाँ पे हमने contact number के लिए. So this is how it will look like. यहाँ पे contact number में हमारे पास 2 boxes आ जाएंगे. Now using the width and height attributes, width और height attributes help करते हैं हमें to change the width of each individual cell of the table, and height attribute help करता है to change the width of the each individual cell in the table. तो इसमें हमने बाकी डिटेल्स सेम थी, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, हाइट और width हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दी in our table. So this is how the height and width of our table will be changed. There is an activity जहाँ पे आपको find करना है and correct करने errors in the given HTML document. Let's revise the chapter. HTML support करता है 3 types of list: ordered, unordered and description list. UL, OL and DL tags are used to start each type of list. List items are marked with li tags, both ordered and unordered list. Description list use करता है dt for the term and dd for the description. Tables are created with table tags, rows with tr, header and with th, cells with t. Table appearance can be customized using attributes जैसे border, bg color, cell padding. Row span and col span attributes allow करते हैं for cells to span multiple rows and columns. Tables can be used for displaying data, structuring page layouts and more. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Which tag is used to create a table in HTML? Tag. An ordered list is marked with which of the following? Well, now which attribute changes the bullet style in unordered list? Type attribute. What does the th tag define? Table heading. Row span attribute is used to extend a cell across multiple rows. Let's do fill in the blanks. So dash list is used for items that do not need to be in specific order, unordered list. Li tag stands for list item. To create a table heading, the th tag is used. Dash attribute is used for specifying space between the cell content, cell spacing. Background color of a table can be changed using the color attribute. Let's do match the following. UL stands for unordered list, OL stands for ordered list, DL for description list, then we have TD for table data and TH for table heading. Let's do true false. The DL tag is used for ordered list, false. The TD tag defines a table data cell, true. Description list is composed of DD and DD tags, true. Border color attribute can change the color of table's border, true. Align attribute is used to specify tables with, false. So students, this was your complete chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise the chapter once again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.